if you see, my life has been like that. Correct. Right. I haven't been to school. I haven't been to college. Learning जो आई मेरी वो हमेशा से ही बातों से आई. तो वो Very अब एक nice. आदत ही बन गई है कि अगर किसी कुछ सीखना है तो किसी से बात करो तो ही सीखने को मिल सकता है, नहीं तो आप कैसे सीखोगे. Hi guys, welcome to another guest episode of Chalchitra Talks. आज के एपिसोड में मैंने बात की सुहानी शाह से. सुहानी शाह एक यूट्यूबर है, मेंटलिस्ट है, मैजिशियन है. शी डज अ लॉट ऑफ वेरी कूल थिंग्स एंड शी इज़ अ ग्रेट पर्सन. मैं अभी इनसे जयपुर में मिला भी था एंड बहुत सारे मैंने लेसन्स ऑफ यूट्यूबिंग लिए एंड कंटेंट क्रिएशन लिए सुहानी से. इन दिस एपिसोड आई टॉक टू हर अबाउट हर जर्नी, हर लाइकिंग्स. उन्होंने प्रेस्टीज मूवी की बात की, हाउ इट इज हर फेवरेट मूवी इन रिगार्ड टू मैजिक. बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग कन्वर्सेशन थी ये, जो मेरे को लगता है आपको भी पसंद आएगी. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू अस, मेक अस रीच 1 lakh सब्सक्राइबर्स. वी आर अ चैनल वेयर वी टॉक अबाउट मूवीज, बुक्स, पॉडकास्ट, poetry, everything related to art. And now let's jump right inside the conversation I had with Suhani Shah. Hi Suhani, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. Thank you for having me. I am doing very well and very excited for this conversation, yeah, because मैंने सुना है काफी offbeat होता है. Offbeat as in बहुत casual होता है. It's not that हम लोग हमारे choices की बात करेंगे and all that. So I'm pretty excited. I'm in a very casual chill zone कि आओ वैभव से बातें करते हैं. Nice. The first thing like I noticed was जो आपकी watch है वो Casio वाली जो है ना, like it is something that I really like, and it is reminding me of something which I always ask the people who come on the channel. If you have to recommend something or a product that you bought for less than 10,000 rupees that you would recommend everyone to invest in, कि भाई 10,000 रुपए से कम की ये चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है. यार ये प्रिपेयर करके बोलना चाहिए था ना मेरे को कि ऐसा सब सवाल पूछने वाले हो. अब मैं कहाँ से कुछ भी आपके अराउंड जो दिख रहा है, इट कैन. मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे आंसर्स देते हैं इसमें. लोग जूते बोलते हैं, किंडल बोलते हैं, लाइक मेरे को राहुल सुब्रमण्यम ने मसाजर बोला था. एवरी पर्सन हैज लाइक अ डिफरेंट थिंग व्हिच दे से. समवन टोल्ड मी स्पॉटिफाई प्रीमियम. कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग like that. It can be like so many things because 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है यार. मतलब उसके अंदर कितनी ज्यादा चीजें आ सकती है. But you know what I would say? I would say a very comfortable quilt or a pillow. Nice. Because नींद बहुत जरूरी है भाई. नींद बहुत जरूरी है. हाँ, तो I think I have this one quilt which is like my comforter basically, which is like मेरे को वो चाहिए. Like I feel very I can't carry it everywhere of course because वो बैग में, but then मुझे वो बहुत comfortable लगता है. And I think वो the best bedding setup, no, you should invest in. You should invest in a bed, a good cushion, a good bed sheet, a good quilt. Yeah. And are you a soft pillow person or a hard pillow person? I'm a no pillow person. Oh, इसलिए मैंने क्विल्ट बोला क्योंकि मैं पिलो नहीं लगाती, बट मैं कुछ जो लगाते हैं उन people who use pillow should invest in a really good pillow, and if you're not, then it's best. I am an arm person. मेरा ये ऐसा हाथ पे मैं सोता हूँ. हाँ नहीं, but like मैं no pillow person और वो under my head हो. मुझे pillows दो चाहिए because I need on the sides. वैसे पैर उसके ऊपर रख के ऐसे सोना है. You see on my bed, you will see like a lot of pillows. And my mother said, "तू तकिया लगाती नहीं है तो तकिया इतना रखती क्यों है ना?" Like it's important, mom. Nice. What else? Because you said there can be so many things. और क्या आपको exciting लग रहा है? बिस्तर, चद्दर और तकिया तो पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिंदगी में. Because वो बहुत ज्यादा जरूरी है. नींद बहुत ज्यादा जरूरी है. उठो तो फ्रेश फील होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है. So that's my first thing. आपको पता मेरा होजे के साथ एपिसोड था. It was him opening his Amazon और वो एक के बाद एक orders. यार मैं नहीं करती यार. मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करती. मैं बहुत कम चीज. I mean I'm somebody who doesn't like to shop. You are a minimalist. हाँ, तो मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या है जिसके बिना मैं रह नहीं सकती है, जिसने मेरी जिंदगी बदली हो. तो मेरे को तो ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा है. Oh, I think one, but I don't know if it's under 10,000. I think अब मिलता होगा under 10,000. It's not essential. It's just comfort, which is an electric toothbrush. Yes, definitely under 10,000. It's a life changer. I'm telling क्यों? you. मेरे को समझना है why does it work? Like मैंने देखा है कुछ लोगों को Very use करते. comfortable. It's very nice.
तो मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी उस चीज से, बट इफ यू हैव वंस यूज्ड एन गुड इलेक्ट्रिक टूथब्रश, यू आर नेवर गोइंग टू गो बैक टू अ नॉर्मल वन. ठीक है, तो अगेन एज आई सेड, इट्स नॉट एन एसेंशियल, इट्स जस्ट लग्जरी इफ यू वांट टू इंडल्ज इन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. आपका सोशल मीडिया हाइजीन कैसा है? लाइक हाउ nicely are you able to use like your phone without, like, is it good hygiene or is it something you are struggling with कि आपको पता ही नहीं चलता कि 8 घंटे लग गए, या इट इज लाइक कि मैं इतनी देर के लिए यूज करूंगी उसके बाद नहीं करूंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे ये सवाल कुछ महीनों पहले पूछते तो फिर तो बहुत बुरा था. हम्म. आई मीन आई कांट से बहुत बुरा था, बिकॉज मेरा नहीं था कि मैं ऐसे बैठ गई हूँ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि कितने घंटे चले गए, वो तो कभी नहीं था मेरे साथ. बट आई रियलाइज के आई वॉज यूजिंग फोन. मैं वो इंस्टाग्राम बंद करके वापस इंस्टाग्राम ही ओपन कर देती थी, यूट्यूब बंद करके वापस यूट्यूब ही बंद कर देती थी. एंड आई एम लाइक मैं क्यों कर रही हूँ ये, यू नो. सो ऐसा हो गया था दैट जब आपके पास कुछ करने, कॉन्शियसली कुछ करने को नहीं मिल रहा है, फोन उठा के उसमें इंडल्ज हो जाते हो, rather than picking up a book or listening to a podcast or doing something हम्म. more productive like spending time with your parents. तो जो भी वो काम के अलावा का टाइम था, जो आपके जिधर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, उसमें कुछ भी मैं सारे ऑप्शंस मेरे बंद करके फोन देखती थी. एंड आई थिंक आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन देयर कि मैंने डिसाइड किया कि भाई ये नहीं करना है. एंड आई विल यूज माई फोन ओनली व्हेन आई रियली नीड इट, and spend more time with my family members, reading a book. Very nice. You know, I do a lot of like I'm more into sports, so I'm very much involved in activities, eating good food, like kuch bhi ho. So I make sure now I don't use phone when I'm eating or I'm watching something on television. तो मेरे हाथ में मतलब I make sure that एटलीस्ट लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो है वो मैं टेबल पे बैठ के फैमिली के साथ कर रही हूँ, एटलीस्ट व्हेन आई एम इन माय हाउस. आई एम नॉट Very वाचिंग nice. टेलीविजन देयर और माय फोन देयर. तो ये कॉन्शियस नाउ आई थिंक आई एम वेरी फाइन, बट देन अगेन दिस अफेक्ट्स माय सोशल मीडिया प्रेजेंस. तो अगर कोई हाँ. लास्ट 2 मंथ्स में नोटिस करेगा तो मेरी नंबर ऑफ स्टोरीज जो मैंने अपलोड करी है, नॉट 2 मंथ्स, मोर देन दैट, जो मैंने नंबर ऑफ स्टोरीज अपलोड करी है, जितने मेरे पोस्ट हुए हैं, दे हैव रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली. इनफैक्ट यूट्यूब वीडियो पता नहीं बहुत टाइम से नहीं गया है. तो वो भी Hmm. हुआ है, बट आई थिंक आई एम नाउ ओके विद इट. लाइक आई थिंक आई एम मच मोर एट पीस विद माई सेल्फ एंड पीपल अराउंड मी विद दिस, Yeah. एंड वर्थ इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This reminds me of that quote जो मेरे को बहुत पसंद है: become so successful that you can afford to be off the social media. Yeah. क्योंकि हम अभी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें रहना भी है, लाइक फिर इतने हो जाओ कि हाँ भाई है ही नहीं. आई थिंक मेरा तो एंड गोल ऐसा ही कुछ है कि नहीं No, चाहिए यार मेरे it's को. the same with me. I can't say right now. Look, आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगेन हमारे भी नीड्स, हमारे डिजायर्स है, हमको भी राइट. चाहिए कि नहीं यार मेरे को एंगेजमेंट बढ़ानी है मेरे इंस्टाग्राम के, ताकि जब एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आए तो फिर उसको कम एंगेजमेंट ना मिले. एब्सोल्युटली. तो वो सब प्रेशर्स रहते हैं, बट द थिंग इज टू फाइंड दैट बैलेंस. मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ. इट्स नॉट दैट कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मैं सोशल मीडिया बंद करके चली जाऊँ. मेरे को बहुत फोमो होता है, especially when there is work coming your way and you do not have the mental and physical capacity to take that work, but then you still want to do it, you know, you feel like तो आप अपना राइट. टाइम जो नींद खराब करके वो काम कर रहे हो, मील स्किप करके वो काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अपलोड, तो वो है वो जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है. फॉर मी, राइट. आई नीड टू समहाउ वर्क अराउंड दैट टू गेट आउट ऑफ दैट, बिकॉज मेरे लिए काम को ना बोलना अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है. लाइक मुझे लगता है कि जीवन में आप हमेशा काम के लिए तरसे, और जब आपके पास आ रहा है आप उसको मना कैसे कर सकते. इट्स नॉट इवन अबाउट मनी, इट्स अबाउट जस्ट हाँ. सेइंग नो टू वर्क इज सो डिफिकल्ट फॉर मी. And social media is a part of it, you know. You हाँ. have to, now it's like it's not just कि मैं मेरी जिंदगी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, it is a part of my personality, my brand name. तो वो एक 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 बैलेंस बनाने में टाइम लगता है, वो एक कंडम चल ही रहा है, बट आई थिंक यू वंस यू नो व्हाट यू वांट इन योर माइंड, यू विल फाइंड योर वे. फेयर आई इनफ. एम रियली, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही बात कर रही थी, where I was telling a friend that I want to somehow find a process where I can automate my social media. It's not possible. It's me who's primarily involved in it. But even if some bits of it I can, which I right या. now have, like my YouTube is all run, like I just keep 2 people to shoot what I'm doing and make a vlog out of it and edit it and put it up. I don't want to know what's happening. It's not completely possible as yet, but if I can find a way, I'm on it. Like just figure out something. Look, I became a content creator in the pandemic. Like, I हाँ. was never a content creator. I was always a live show artist.
मैं हमेशा हाँ स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी. इनफैक्ट अगर मुझे पैंडेमिक के पहले कोई बोलता कि आपको एक बोला हुआ था, लाइक कोई मुझे बोलता था कि आपको वर्चुअल परफॉर्मेंस देनी है, लाइक वर्चुअल परफॉर्मेंस कौन देता है यार, आके शो में आओ बैठो या मुझे बुलाओ वहां पे मैं कर लूंगी. आई वॉज ऑलवेज अ बिग नो फॉर अ वर्चुअल परफॉर्मेंस. एंड कट टू पैंडेमिक, दैट्स ऑल वी वर डूइंग. या एंड देन एक वो भी होता है ना कि इफ यू आर डूइंग समथिंग यू रियली वांट टू डू इट वेल. हम्म So for me, when the pandemic started and we started creating these virtual shows, you wanted to do it well. So you became more राइट creative and you had so much more time on yourself to figure things out. And people were also supporting you. अगर आप गलती भी कर रहे थे ना, they were okay with it या because ट्रू anything was fine. Like कुछ कर रहा है इंसान, वही बहुत बड़ी बात हो जा रही थी पैंडेमिक में. तो मैंने शोज बनाए, डिजिटल शोज बनाए, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया, विच वॉज माई बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट. वाओ I remember when I started live streaming on YouTube, मैंने decide किया था कि पहले 10. So I was like, let me call somebody like a Tanmay Bhatt or a Samay Rana in my first live stream, so that it gets like a big. But then a friend suggested that, mat kar. Like, don't get anybody for your first live stream. वेरी Just do नाइस first 10 live streams by yourself. देख क्या होता है. Make mistakes. So I was like, that's a very good idea because I could build my own audience. And I did that. In fact, if you see my first 10 live streams are just me playing Scribble or doing something or the other, where people actually made Susha squad, they developed Discord, they just came in and like made an entire community by themselves. I was like, logo ke paas bhi bahut time hai. Yeah. So and on my 11th stream, I made sure I got Zakir Khan. oh this is smart, this is smart. Yeah, I was like, 10 streams ho gayi hai. 11वीं, if you go and check 11वीं stream pe, there's Zakir Khan. आपने एक और चीज बोली कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से नो टू वर्क, बट इन जनरल अगर हम वर्क एलिमेंट हटा दे, आर यू गुड एट सेइंग नो in life to people and things? I think I'm work in progress. Okay, Yeah, so I am not, let's keep it that way, but I again realized it that I'm not. So got it. now I'm learning and slowly. No abhi bhi nahi bola jata, but subtly ke हाँ sorry bhai, nahi देखो यार, मैं किसी और से करवा देती हूँ. ah nice. Yeah, so but I think it's extremely important to be able to say no for Yeah. your sanity. There are many reasons, but I think for me the primary reason is for my own sanity. I came to a point when I started learning to say no, it's only because I didn't have an option other than saying no. अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो शायद मैं नहीं बोल पाती, but I think life teaches you, and that's what happened with me. You know, सब बोलते हैं कि ये लोगों को सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पसंद, एंड लाइक ऑन चलचित्रा आई हैव काइंड ऑफ डिफेंडेड देम अ लॉट, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता होता ना, तो मैं उसके हाउ टू पढ़ लेता हूँ, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. तो मैंने कॉलेज में सेकेंड ईयर में एक किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ नो, एक जेम्स अल्टुचर की किताब है. मैं तो काफी कुछ सीखा उससे कि यार, क्योंकि अगेन ये स्किल है कि हाउ टू से नो विदाउट बीइंग एन एसोल, राइट. Wow. तो ये वाली स्किल मैंने दी. Amazon books. Yeah, James I Altucher, am the ordering it right now. The power of no. chalo. It's yes, got it. James Altucher. and Claude. There are two people. Acha, okay, got it. हाँ, yeah. Book has been ordered. 2nd August पे इसका delivery दो. Why so late? I needed earlier. Kindle order कर रही हूँ. Kindle order कर दो, Kindle order कर दो. Wow. ये बेस्ट है, ये बेस्ट स्टाइल ऑफ वो है, रिसीविंग recommendations and giving recommendations. आज देखते हैं मैं आपके कितने खर्चे करवा पाता हूँ during the recording. That's As we are not the recording. agenda of this podcast, vaibhav. ये साइड एजेंडा है, ये हमारा ऐसे कि ये अपने प्रोडक्ट बिकवाना, किसी और के क्यों बिकवा रहा है? नहीं यार, लाइक अच्छा लगता है when people like are into like good books and stuff. But हाँ, now going back to the thread which I started, like social media hygiene. Apps जो आपके फोन में है, did you find any app in your phone recently, or are there any apps which have helped you be more productive, be more calm? इसके लिए आप अपना फोन भी खोल सकते हैं. Which are your favorite apps in your phone? So I'll tell you something very interesting that really changed my perspective towards the phone. So whenever you open your phone, you instantly see like a number of apps. And I did not want that. I did not want my phone screen के क्योंकि फिर वो एक subconscious thing हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ click करोगे. So my phone screen, the first screen doesn't have an app.
It's this. Very nice. So Very it just nice. shows the watch, my notes, which most of the times has my to-do list. It shows Very me the nice. calendar, the battery, and if I want to search something. So when Wow. the moment I open my phone, I do not see apps. I don't ये want to करने see. वाला हूँ मैं आज. हाँ, Yeah. and then नीचे भी मैंने ना photos नहीं रखा, मैंने कोई भी WhatsApp नहीं रखा. I just kept this because bank messages आते हैं इस पे. And there is a camera and there is my phone. So even like I'm just like making sure कि मैं externally influence नहीं हो रही चीजों से. Then when I go swipe, and in fact even when the swipe is that there's literally just one swipe that you'll see. There's just after that is just the widget. Damn nice. Damn nice. So everything has to be here because I feel nobody needs more than this. Damn nice. So if there's anything more than this, I have to delete. Of course, there Dude, you have Notion. I saw Notion. Yes. So I was going to talk about Notion next, and how Notion has changed, has been one of the biggest change in the way that I'm calming myself and organizing. So if you see Notion's right here. Yeah. Again, I work very psychologically. Like I'll put the important apps here because my thumb reaches here first, and then come use hone wale wahan par. So anyway, so all those bits. So I have designed my phone very much in a way that supports the lifestyle that I want. Recently, I've started waking up also, which is again a very good. Sam Harris, the Sam Harris ka waking up. It's going to be too soon to comment on that. Because एक सेकंड मैं क्या पे जानना चाहता हूँ आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है पेड सब्सक्रिप्शन किसका waking up का yeah but I haven't explored the app much yet. I'm just saying ये मैंने इसके बारे में एक बार एक वीडियो में भी बात की थी. The cool part with Sam Harris is the waking up is that if you write to them कि hey like I don't like I think it's expensive and I don't want to pay right now, वो आपको 1 साल की फ्री मेंबरशिप दे देंगे. और 1 साल बाद अगर आप उनको वापस मैसेज करोगे कि यार मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है, वो आपको वापस दे देंगे. आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मैंने किया हुआ है. बट लाइक मैंने अब पैसे देके हेडस्पेस की वो ली है क्योंकि मेरे को था कि पैसे देते थोड़ा गिल्टी फील करते फिर मेडिटेट करेंगे. But yes, it's a crazy thing about waking up. You just write to them. Yeah, but I think I just like waking up in terms of its entire philosophy around things. Not just one. So I wanted to do this 30-day thing of it's for a very, very long time. But मेरे को time नहीं मिला था. But now I'm like कभी time मिलेगा नहीं, so I should just start doing it. So I will comment on it once I have like used it for a few days or at least 2 weeks. तो अभी 2 week नहीं हुए. So, but yes, waking up and Notion is something like my go-to apps for now. For like I want to take notes or plan things. This is it. Notion pe I think we can do a 10-hour podcast because the whole Chalchitra Talks runs on Notion. Like really? You surprised like how much effort I have put in Notion. मेरी पूरी टीम मैंने उसका प्रो वर्जन लिया हुआ है. मैं मतलब अली अब्दाल का दुकान बंद करा सकता हूँ अगर मैंने कोर्स बना दिया Notion में. तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस. I just feel कि जितना Notion पे दिख रहा है क्या हम उतना काम करते भी है. Seriously नहीं ऐसी. We just like it. No, we just colors पसंद है, aesthetics पसंद है. If I open my Notion is so similar, but I just feel like मैं इतना काम करती नहीं हूँ जितना इसमें दिख रहा है. But exactly, Notion is life changer, yaar. I mean, but again, it's only I feel I'll be very Notion सीखने के लिए पहले आपको 15 दिन जाते हैं, ठीक है? It's quite an investment. Hence, we should make a course. The world needs a Notion course. I think you should at least for मतलब उधर बहुत सारे courses already है यार, but I think there's still less. You know, you can make one more. Yeah. And especially you can make one in Hindi for people. Right. That'd be so cool, ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि 15 दिन तो नोशन सीखने में जाता है, फिर उसको आप यूज करोगे. और ऐसा नहीं कि यूज करना आसान है बिकॉज उसका फोन वर्जन इज नॉट दैट ग्रेट. It's terrible. Desktop version is great. So if I want to use something on my phone and I use like a mini, like I use a very small phone. So इधर अगर मुझे ज्यादा देखना है तो it doesn't serve me very well. So I have to have my laptop. I'll have to have like either a laptop, iPad, or I have to be on my PC to use Notion. So so what I have done is I have delegated to someone. So मेरी team में there's this person. उनके साथ मेरा एक WhatsApp group है. It's called vaibhav's Notion. So if I discover something या YouTube पे कोई link होता है, I just paste everything there. I think a life agenda is just कि मेरा Notion अच्छा दिखे. हाँ, nice one. बहुत सही. मतलब बाकी सब ठीक है यार, पर Notion से consistency जो Notion पे चल रही है ना, color coordination, उफ. हाँ.
और ऑन व्हाट्सएप पे मेरे खुद के साथ बहुत सारे ग्रुप्स हैं. लाइक यू मेक अ ग्रुप विद समवन एंड देन यू किक दैट पर्सन आउट. सो मेरा एक ड्रीम्स का ग्रुप है जहाँ पे मैं सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे मेरी ड्रीम्स लिखता हूँ. आज ये सपना आया. लाइक only like do you have like groups with yourself where only you are there? Yeah, but it's only called work notes. Which is your favorite social media app? Social media app, I think I'm still gonna be with YouTube. Nice. Yeah. Nice. I'm still a person who wants to watch a little bit of long form content. Nice. But again, as I told you earlier, my content consumption is very less, like very less. तो मेरे को मूवीज चल जाती है. मैं कभी अगर होगा तो 2 घंटे का मूवी देख लूंगी. बट अगर मुझे कोई सीरीज देखना पड़ जाए ना, जो मुझे कंटिन्यूअसली देखना है, एक एपिसोड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब यार ये थोड़ा सा मेरे को आई finding that much time becomes a little difficult for me. So that is one. But other than that, yeah, I think YouTube I still like. Which are the favorite YouTube channels? Okay, I didn't say YouTube in terms of content consumption. I said YouTube in terms of putting out content. I understood, but like in general, I want to know about your favorite creators in India and world, or your favorite channels. It can be like a cats ka koi Insta handle you like follow, or it can be a shout out to think, but again, as I said, mera itna like I don't know how much I'm subscribed to also, because itna mera wo hai nahi ki I will not find a channel and watch that content. मैं जिस mood में हूँ, I will search something of that and then keep and watch that. Like my last few video searches were more about something related to Final Cut Pro, because and I was not even sitting on Final Cut Pro and doing that. I'm using a Windows, that's on my laptop. But मेरी flight में मुझे particular चीज understand करनी थी, and I was like, I went and watched that. फिर उसके पहले a lot of searches were about Notion. Like a lot of them. So वैसे हो जाता है. तो it is just that. तो मेरा ऐसा कुछ particular वो नहीं है कि मैं इसका तो हर वीडियो देखना ही है मुझे. And you have never felt guilty about it कि यार मैं कम content consume करती हूँ, या मेरे friend. Sometimes I do. Sometimes I have, and even now, because a lot of times, because I'm in this circuit now where you meet a lot of people of the same, like you meet a lot of YouTubers, and then I meet a YouTuber who maybe apparently has very good numbers and has made a really good name for themselves and who have worked very hard in the field, and then I would meet that person. I'm like, like I don't know about the person. So and this is a very common thing. Like I would not know about people, and I would not know about what is the किसने किसका रोस्ट किया है, या कुछ लेटेस्ट न्यूज होगी यूट्यूब को लेकर कि पता है उसने ऐसा यूट्यूब. आई एम लाइक क्या हुआ है मुझे बताओ, So I realized that I'm a person who likes more of conversations over everything else. Very nice. So if you ask me to sit and have a conversation, you give me the news. Because my friends, I told you about Yaya, I told you about Sid. I'm like, you guys consume content. Then talk to me on the phone. Then tell me, ye hua. I'll be very happy. So that is my way of getting information. And I think I like that. Are you an extrovert? Ambivert नहीं बोलना, introvert या extrovert वैसे बताओ. यार पता है, I feel मेरे साथ नहीं यार, सबके साथ है that you always are both. हाँ. So if you put me on my stage, मैं stage पे अगर मैं हूँ तो अपन ही है भाई, और है ही कौन लाइफ में. हाँ, right. Now if I'm talking to you one on one, like right now it's sort of Zoom call, ठीक है, अगर हम in person मिले तो I'll be even better one on one, ठीक है. But now if you put me in a group, then I will be very like, fold your hands and sit, listen to everybody, I don't have anything to say. So it's like this. तो मैं ग्रुप्स में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती. अगर बहुत ज्यादा लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं या कुछ है तो मैं ऐसे चुपचाप I'm in my zone, or I will say when needed. Like ऐसा भी नहीं है कि I'm somebody who's not going to talk, but I'll show my presence and all. I'll be very normal there. Fair enough. And I will leave. Like I don't want to be. But one on one, I will love to have conversations. On stage, I love to have conversations. Things like that. Let's say there are two people, or like one is an introvert, one is an extrovert, right? Both of them have like coins in their, like coins आप उनकी energy मान लो, ठीक है, 10-10 कॉइन्स है तो उनके पास 10-10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है. इंट्रोवर्ट्स के कॉइन बात करने के बाद बढ़ जाते हैं कि कॉल किया उसने, they are more energetic after it. They now have 20 coins. Extroverts. Introverts go down to 2 or 0 coins. In that case, I think extrovert. Yeah. If I have a good conversation, I'll be very high on energy.
Nice. Not just high Nice. on energy. I'll have solutions to problems. I'll have more Very ideas. nice. Very If I nice. want to, let's say, prepare a new magic act, like a new concept, I can't sit here and eureka moment nahi hota mujhe. I will call people who don't even understand magic sometimes. Hmm. But I'll call them and I'll talk to them and I'll be like, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो. Sometimes they'll just go like, but even in that conversation, no, I will get my idea. So for me, conversation is very important for sanity. Yeah. अगर आप मुझसे अच्छी बातें कर रहे हो, कभी कभी आप मुझे अपने आइडिया सुना रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके आइडिया सुन के मैं इंस्पायर होती हूँ, मुझे भी फिर उसके अंदर कुछ इनपुट होंगे, या फिर उसको सुन के मुझे कुछ नया आइडिया आ जाएगा. तो अगर मैं आज, बट अगेन, if you see, my life has been like that, correct? Right. I haven't been to school, I haven't been to college. तो ऐसा कभी प्रोसेस नहीं हुआ कि लर्निंग जो आई मेरी, वो हमेशा से ही बातों से आई. तो वो Very अब एक nice. आदत ही बन गई है कि अगर किसी कुछ सीखना है तो किसी से बात करो, तो ही सीखने को मिल सकता है, नहीं तो आप कैसे सीखोगे? बिकॉज of course there are books, of course there are podcasts, of course there are videos, but my mode of taking information has always been conversations, and that's what I'm most comfortable with now. Beautiful. And अभी जैसे हम 2022 में ना 2022 एडी, तो अब कैलेंडर आया था जब एडी चालू, उससे पहले बीसी था. एंड आई हैव अ क्वेश्चन हियर व्हिच आई आस्क एवरीवन. हर जने की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब कैलेंडर रीस्टार्ट होता है. बीसी टू एडी मोमेंट बोलते हैं इसको. व्हिच वाज दैट बीसी टू एडी मोमेंट फॉर योर लाइफ व्हेन योर कैलेंडर रीस्टार्टेड? So I do have a specific answer for this one, like the answer you would want, but I have to say something before that. हाँ जी. Interestingly, my life, if when I look back, I don't know how it's going to be in the future, but when I look back, my life has changed every 4 years or 5 years. No, 4 years actually. So every 4 years, the place where I'm staying, like my city changes, my profession changes, my set of close friends change, like my entire life changes. Not just like a part of my life, my entire life changes. Like I remember starting as a conventional magician, okay, and then uske andar bahut changes aaye. Then I got into giving talks and training programs and psychology, and I wrote books, became like an author of 5 books on psychology, human behavior. Then again I changed to, like, I opened a clinic in Goa. I ran that clinic for 9 years, and then I realized that okay, I want to do something else. I moved to Bombay, and then I started like mentalist. I was an illusionist, which is a different genre in magic. And from illusionist I turned into a mentalist, which is an absolute career change. It's like it's like turning from a kuchipudi dancer to a jazz dancer. Like it's that big a difference for people who understand magic. So I changed from being an illusionist to a mentalist. Then I was in politics for 4 years, like 4 long years. I did politics. I quit everything else and I was only in politics. And in pandemic I became like a YouTube live streamer, and then a content creator. And everything I've done, not like aise shauq kiya, like, aise like masti mein kar liya. I was into it. Like I was properly doing it, excelling in it, and learning the, nitty-gritties and just being there, making sure that I don't fail at it. So ab itne zyada turning points aaye hain कि I don't know which is that one that stands out. So career wise, I can't give you one because there will be many. Like starting magic has been one of the biggest moments of my life. When I was 7 years old, doing that first show of mine, I don't think anything beats that. But then again, I was too small to understand that. I'm 7 years old, so I don't. So I'm going to give you a moment which is very personal. Yeah. I don't know if I can give out much details about it because it's actually very personal. But when in 2017 was this one year where I had taken a break, where I was not doing anything. Like हाँ, यहाँ वहाँ के थोड़े corporate shows आते थे तो वो हम कर लेते थे, but I wouldn't call that work. I wouldn't call, वो था कि बस कर रहे हो आप, ठीक है. But there was a span of like 7 months where I was doing nothing. To a point, it was in the most cliche way that I went to the Himalayas and I stayed in silence for a month, and I was off my phone. I didn't want to do anything. सब बंद कर दिया था मैंने. And once I returned from there, everybody thought कि this is it. So like she's been a child prodigy and बचपन से काम करी, and that's how it works. And then when you stop, so everybody thought that this is the end of my career.
and they want my parents were like, "ठीक है, अब शादी भी कर लेते हैं, चाहिए तो like just get married. What do you want to do next?" Like they were supportive, but then there was a lot of these phases where I was now seeing things in a very from a very different perspective, because all my life till 2017 there's never been a time where मैं समझदार, मतलब of course before 7 years old I'm not counting, but from the age of 7 when I did my first show till 2017, um there's never been a time when I'm not been working. So everybody looks at me with my work, like, okay, what I'm doing and how I'm doing it. Suddenly I'm not working, and I'd see how people's perspective towards me changed, how they look at me changed, how they talk to me changed. And it was quite an insightful 7 months for me, I must say. Like a lot of things I understood in that period. Now that is for the world where they thought that I'm doing nothing. But for me, in my head, I was doing something like very kick-ass. In my head, I was creating a show that involves illusions and psychology. And so I'd stopped my clinical practice and I had quit politics. I was like, मुझे नहीं चलाना मेरा clinic, और मैंने politics 4 साल बाद quit करा था. तो and magic shows मेरे वैसे ही मैंने कम कर दिए थे. So nothing was really happening. And in my mind, I was trying to combine all of it and make something very massive. So that was quite a turning point for me. I also moved out of my house from Goa. I moved to Bombay. I started living by myself. So this, I think the 2017 का जो year ही है, उसमें जो मेरे experiences रहे, they have been a turning point of my life. I cannot be the Suhani that I was before 2017. It's a different me after that. I'm a different person. I'm a different artist. I'm a different daughter. I'm a different friend after 2017. I also lived in a Buddhist monastery for quite some time. Nice. And that was life changing. And when I returned from there, I think there was a point where I didn't want to go back to what I was doing. And now I had to figure out what I want to do. So for me, I was just taking my time. It was not about, my head was not thinking I'm taking a break. I'm just taking time fair to enough. decide what to do next. So for me, it was just that. For people, it became like, ये तो कुछ नहीं कर रही है. Because nobody had ever seen me not doing anything. और आपने कहा उस मोमेंट पे लोग जैसे आपसे बात करते तो वो चेंज हो गया. सो इन अ नेगेटिव सेंस, लाइक थोड़े पैट्रोनाइजिंग, कॉन्डेसेंडिंग हो गए लोग. Yeah, that was there. कि ठीक है ना, अब कितना हो गया, अब तो काम कर लिया, अब थोड़ी वो होता है. There would be some business conversations and they're like, अरे तू नहीं समझेगी, तू रहने दे. And I'm like, hello, I've been working all my life. So I realize how conversations change with how it's all about perspective. It's all about the story you make for yourself for them. Like, how are they thinking about you? And you don't always want to tell what's going on in your mind to everybody. Like, you want to maintain that personal space. And I wanted to. So, but it was interesting for me. Like, the one reason I did not even go out and open up and tell people about it, because अब मैं enjoy करने लग गई थी after a while. Look at this person talking like this. Look at how he was talking earlier. So now it all became a part of the story. So I've been very, like 3-4 months, I felt very sad, very upset. I was like, excuse, what do you mean? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये? जब तक मैं काम, मतलब वो सारे typical thoughts जो आपको आते हैं, वो सारे आ रहे थे मुझे. After 3-4 months of being into this deep down shit of, I don't know what's happening and why do people look at me like this, and is this humanity कहाँ चली गई है, and is it only work and money that matters, वो सारे cliche thoughts आके चले गए. Then now I'm enjoying about. Then I'm like, this is what acha, okay, interesting. Because in my head, I still knew I'll do something, I didn't know that what I'm going to do or at what level I'm going to, be. But I knew that I'm going to do something for my own sanity, something कि मैं खुश रहूंगी, बाकियों का मुझे नहीं पता. And parents are supportive. उन्होंने इतना ज्यादा परेशान नहीं किया मुझे. Do you have mentors? No. मैजिक में तो वैसे भी नहीं होते. नहीं, ऐसे जब लाइफ की कहीं आप लाइक फंस जाते हो तो आप पूछते हो किसी से, मैं आगे लाइक डू यू टेक ऐसे एडवाइस फ्रॉम people whom you really look up to in that sense? Not really, but I have 2 friends, so I think again, talking, उनसे बात करना is like finding solutions. So and it's very interesting how both my friends, they both live in Goa, and
So one friend will talk absolute nonsense. So we three are friends, not individuals. So we three is a group. So with one friend, it's just talking absolute nonsense. कोई हाथ पैर की बात ही नहीं हो रही यार उसके साथ. कुछ भी हो रहा है. दुनिया भर की गॉसिप हो रही है. जो information that is not needed, that's not going to serve you anywhere in your life. You're not even going to remember tomorrow that information. वैसी बातें हो रही है. That helps you, which is I feel an escape. जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं उसको कॉल करती हूँ कि हाँ ले तू बोल, तेरे को जो बोलना है बोल. नॉनसेंस, ठीक है, इट हेल्प्स. एंड द अदर फ्रेंड, शी इज आवर थेरेपिस्ट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड, you know. So we go to her, is like me talking to her is my problem solving. I think she understands me at a level I want to be understood, and she knows what to talk, how to talk, and when to talk what. So just helps me a lot. So I think ये दोनों जो मेरे दोस्त है ना, वो थोड़ा मुझे बचा के रखा पूरे टाइम पे. Got it. And I think that's the time I also started valuing friends in my life. I never valued friends as much as I do now. Very nice. एक अब बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ मैं, like ये सवाल सारे ही मुश्किल आ रहे हैं वैभव. ऐसा कोई पॉडकास्ट होता नहीं है जितना तू ऐसे सवाल पूछता है. But I hope मजा आ रहा है आपको. And you've just put me into this इंट्रोस्पेक्टिव मोड. हाँ, अभी मैं सोचने वाली हूँ इस पॉडकास्ट के बाद कि अरे मैंने ये सही बोल, बिकॉज ये सब बातें किसी को पता नहीं है. प्लस आई फील लाइक ये नहीं वो बोलना वो, बिकॉज प्रोफेशनल सवालों के जवाब हमारे पास इतने रेडी है ना, ऐसे गोखे हुए हमने उनको, ये सब हमने कभी जवाब नहीं दिए. तो अभी आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. But I hope you are enjoying it. और ऐसे में कोई जबरदस्ती कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि fun. It is I don't know. But मेरा मुश्किल सवाल ये, अब तो आपको ये भी बहुत ही ऐसा लगेगा टीड़ा. My मुश्किल सवाल was how are you doing currently? Genuinely asking. अभी how are you? What's the headspace like? I'm in a much better space in my life. I will not say there are no problems and there is no anxiety, and no, they're always going to be there. And I think the acceptance that they're always going to be there has happened. And that's a very good space to be in. Like Abana, like just yesterday, a very important shoot of ours got messed up. Like we saw the footage and we realized it's pura blurred hai. And it is extremely important in every way, in terms of career growth, in terms of money, in terms of artists who was involved in it. And my first reaction was, I was so pissed off with my entire team. But then it was okay. Like I'm in a better headspace now to understand that everything will pass. Yaar, matlab ho jata hai sab. Nothing stops you. Like even if let's say this particular bit which I thought was a great career growth for me and I lose out on this opportunity is fine. Just because of this मेरा career खत्म नहीं होने वाला है. So it is okay. Like I have come to believe everything is fine and nothing matters more than you and your art. Nice. And this one philosophy has helped me a lot. मेरा जो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि कुछ शूट किया और उसकी बैकअप को कुछ हो गया, फुटेज को कुछ हो गया. तो मेरा ऐसे फेटिश है कि मेरे हर कॉन्टिनेंट में हर शूट के बाद 7 कॉन्टिनेंट्स में ना फुटेज हो. मतलब कि ऐसे मेरे को इतना डर लगता है कि यार फुटेज को कुछ ना हो जाए. तो अभी भी लाइक राइट नाउ ये जिस कल हुआ है तो अभी भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. तो अभी मैंने बोला है उनको कि पूछ लो अगर ब्रांड से यू नो वी कैन रीशूट इट एंड गेट द आर्टिस्ट टाइम एंड ऑल इज वेल एंड स्टफ. जितना कॉन्टेक्स्ट है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इट कैन ऑलवेज बी ऑडियो ओनली आल्सो, राइट? लाइक आप लाइक अगर ऑडियो सही है और सिर्फ ब्लर्ड है ना, तो जो आप नहीं, जो खराब हो गई फुटेज आपने जैसे बताया ब्लर्ड है, सो जस्ट गिविंग अ सजेशन. इट्स अ मैजिक वीडियो, नो आई हैव परफॉर्म्ड, कांट बी ऑडियो. बट मैं कह रही हूँ कि कुछ, बट एनीवे, सो the thing that I would feel sad about for a long time, now it doesn't affect me that much. I will feel sad but not. अब आप स्नैप आउट करने में बेटर हो गए हो. करेक्ट. Yeah, because I also don't want to be somebody who doesn't feel sad. यार मतलब आपको feel, you want to feel sad. You want to feel all the emotions. That's what humans are for. Like I want to feel sad, I want to feel jealous, I want to feel insecure, I want to feel happy, excited, curious, anxious. So I want to be this little ball of all the emotions out there, but I just want to, I don't want an emotion to overpower me. I just want to enjoy having them and feeling them as they are. And I think वो समझना और उसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ में. जैसे लोग बोलते हैं कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, डू यू बिलीव इन दैट? लाइक यू हैव टू बी सैड टू बी एन आर्टिस्ट, या असली संगीत तभी निकलता है? So what's I did my first ever stage show when I was 7 years old. Nice.
So clearly I'm not heartbroken at the age of 7. Right. मतलब I don't think it's टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है. I think it's more about not just a heartbreak but any kind of trauma helps you to look within, because still there is no pain in trauma. You're still enjoying external things more. वो एक जरूरत नहीं पड़ी खुद के अंदर झांकने की. You look like it's like अगर मैं मेरे लैपटॉप को डिसमेंटल करके अंदर खोल के तब देखूंगी ना जब उसके अंदर प्रॉब्लम है. जब प्रॉब्लम नहीं है तो लैपटॉप अच्छा चल ही रहा है, मैं क्यों उसको फालतू में खरीदूं. आई थिंक इट्स सेम विद ह्यूमंस. जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम अंदर जाके उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. So any kind of pain, any kind of trauma helps you to look within. When you look within, maybe that is the time you start understanding things better and you understand better. And now you want to convey this outside through art, through conversations, through whatever medium you feel comfortable with. If you see a lot of people, it may not be art. They might just run marathons for it. And some people might just get better at their corporate job with it. So it can be anything. But I think looking within happens when there is when you want to fix something. And that's why probably टूटे हुए दिल comes in picture. मैं क्योंकि थोड़ा एंटी टूटे हुए दिल फिलॉसफी से आता हूँ. लाइक I'd rather be a happy artist than a sad artist, because मेरे को ऐसा लगता है कि more important is that you are feeling safe when you are like working, और आप एक ऐसी headspace में हो जहाँ पे आप actually सोच पाओ. And for me, any kind of extreme emotions help create art. Extreme happiness can also help create art. हमेशा पेन और जो सैडनेस के एम्पलीफिकेशन की बात होती है ना, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेंजरस एक वो है कि सिर्फ इससे आर्ट निकलता है. कि तो वो कि लोगों को लगता है दुख होना बहुत जरूरी है. नहीं यार, आप चिल हो सकते हो लाइफ में और तब भी आप अच्छा. जैसे आपने कहा आप 7 साल के थे व्हेन यू स्टार्टेड लाइक डूइंग इट. सो बिकॉज ये बहुत एम्बेड हो चुका है लोगों की लाइफ में कि हमें याद है रॉकस्टार में बोलता है मतलब घर में भी सब जिंदा है पैसे की भी दिक्कत नहीं है कैसे आर्ट बना हुआ है. That's the first thing that comes to mind, right? I mean, one of my favorite movies. But yeah, I mean, I completely agree to that. I mean, I'm saying that when you fix yourself, you look within only when you have to fix yourself, which is when you haven't otherwise. और अगर आप ऐसे ही सेल्फ अवेयर हो, आपको पता है आपको क्या करना है, you love what you're doing, you're happy, you will anyway bring out good. I'm also of the same philosophy of like I don't want to. In fact, when I am sad and all, I don't want to work. Yeah, काम कैसे करोगे यार अगर मतलब लाइक ऐसे संगीत तो नहीं निकलने वाले, बिकॉज आप बेड से नहीं निकलना चाहते, संगीत कैसे निकलेगा. Also, isn't it that if you really like what you're doing, आप खुश हो जाते हो वो करते वक्त, तो आप सैड कहाँ हो? एग्जैक्टली. मतलब मैं कितनी भी बीमार हूँ, मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरे को बहुत दर्द है, मेरे को बुखार आया हुआ है, फिजिकल छोड़कर मेंटली कोई अपसेट हूँ मैं, किसी ने कुछ मुझे बोल दिया है, मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मैं फील कर रही हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे को इम्पोस्टर सिंड्रोम चल रहा है, सब कुछ हो गया. द मोमेंट यू पुट मी ऑन स्टेज एंड आई डू अ शो, मेरे को सब ठीक हो जाता है. इट्स मैजिक, इट्स लाइक मेडिसिन. If I am not even making this shit up, you see my manager and you see my friends, and when I'm really ranting about something, they'll be like, यार तेरा शो नहीं हुआ है क्या इतने दिनों से, just do one show ना, you'll feel better. And it's true, I'll do one show and I'll feel better. I'll feel दुनिया सब sorted है, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा हुआ ही नहीं है लाइफ में. So if you really love what you're doing, it'll make you happy. If it doesn't make you happy, there's something wrong. Yeah. You need to fix that. मेरी एक कोट था फेवरेट्स में ऑन द सेम लाइंस की व्हेन यू फील प्रोडक्टिव यू आर अ नाइसर पर्सन, यू आर नाइसर टू योर गर्लफ्रेंड, यू आर नाइसर टू पीपल आउटसाइड, क्योंकि अच्छा लगता है यार आज कुछ किया है, यू आर हैप्पी. अगर नहीं किया होता 4 दिन से देन यू आर अ टेरर टू लिव विद. जब ऐसा होगा कि हम डोंट बी अराउंड मी, लाइक ऐसे नहीं. अच्छे जब खुशी है तो मेरे को लगता है एम्पलीफाई ही होती है. Yeah man. Happiness is very important. I mean, I also feel ke you need to be an happy art, but usually when you use that word happy artist, I was like, for society that's an oxymoron. Like a happy artist. But I think that's true, like you need to be an happy artist. But I feel artists are happy if they're doing what they like to do. It's a very overrated thing saying कि नहीं दुख होना जरूरी है. I don't think that's important. Virtual hi-fi क्योंकि we are on the same page. नेक्स्ट थिंग, मैंने ना तन्मय भट्ट के साथ एपिसोड किया था, उनसे ये चीज पूछी थी कि 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं. अब ये दूसरे एक एनालॉजी देता हूँ आपको. ये एक डेव परेल है ट्विटर पे, उनकी एक एनालॉजी थी कि आइदर यू कैन बी अ मशीन गन
और अ स्नाइपर राइफल. मशीन गन वो होते हैं जो धक 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 कंटेंट बनाते हैं और एक गोली लग जाती है एंड लाइक उनका कंटेंट चल गया. स्नाइपर होते हैं टाइम लेते, 6 महीने में एक गोली चलाएंगे और उनकी वो लैंड करेगी, मतलब इट विल हिट द टारगेट. सो एज अ कंटेंट क्रिएटर, do you think of yourself as a machine gun or a sniper rifle? Okay, you won't like my answer. I'm being very honest. I first of all don't consider myself a content creator. ठीक है. Okay. I have to use the term to make people understand कि हाँ मैं YouTube पे वीडियोस बना रही हूँ. I will never introduce myself as a content creator. Because मैं वो नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं शोज करती हूँ. ठीक है. पेंडेमिक में मैं बोर हो रही थी तो मुझे कुछ करना था तो मैंने YouTube पे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए. लोगों को पसंद आया, अब लोगों को पसंद आएगा तो मैं और बनाऊंगी. Because at the end of the day जनता मेरी जिंदगी है. मतलब I do things for people. ठीक है. I'm an artist. So I mean not do things for people but basically artists के लिए audience important है. Let's keep it that way. तो अगर ऑडियंस को कोई चीज पसंद आ रही है तो आई शुड डू इट. इट्स सिंपल. तो मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर समझती नहीं. आई विल क्रिएट कंटेंट जब मेरा मन करेगा. तो अगर मेरे को मन कर रहा है अभी मशीन गन चलाने का तो मैं अगले एक हफ्ते तक रोज वीडियो डालूंगी. पर अब मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं वीडियो बनानी मुझे, तो मैं 6 महीने तक नहीं बनाऊंगी. बिकॉज माई सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट कंटेंट क्रिएशन. I don't have to create content. I like creating content. There's a difference. And because I like creating content, I will do it when I feel like it. Nice. So that is how I work with that's my content creation story. So yeah, it's not. तो अभी अगर आप जाके देखो तो लास्ट YouTube अपलोड होगा पता नहीं कब. लेकिन मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते से मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगी बिकॉज मेरे पास कंटेंट बना हुआ पड़ा है. So it's just like do it as you like. But that's something not what I would recommend to professional content creators who have their living on it. किताबों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. लाइक आर यू लाइक इनटू बुक्स? आपने किंडल पे अभी मेरे सामने एक किताब अभी ऑर्डर की है. व्हिच आर योर सम ऑफ योर फेवरेट बुक्स और कौन से जॉनर्स पसंद है? I don't know if I want to talk about books because I am not quite a reader. One of the books that I'm reading currently is on mentalism, so I can't reveal that name. But that's one of the finest mentalism book. If I feel like I really want to talk about that book, but it's so against my art that I can't. नहीं क्यों? मैं समझा नहीं, आप बात क्यों नहीं कर सकते उसकी? Because it's about mentalism and then it's revealing the trick, revealing where do we get ours. You can't. It should be only between magicians. So giving FOMO to everybody right now. But it's one of the it's a classic of mentalism. It's a very बहुत सालों पुरानी बुक है जो मेरे हाथ में आई है. तो मेरा ऐसा माइंड ब्लो हो रहा है अभी कि ओ माय गॉड ये क्या सीन है, you know, something like that. So that's one of the books I'm reading right now. And before this I was reading, which is my go-to book. Like I keep it with me, like it's right now in my bag. I just keep the book with me. It's called The Road Less Traveled by M. Scott Peck, and it's something that is my go-to book. मैं बैठी हूँ 15 मिनट खाली है, मैं खोल करके कोई भी पेज ओपन करके I'll start reading. Because the way things are explained, the way life philosophy is explained in that is something I want to keep reminding myself of. But other than these two in the last, and I'm a very slow reader, मुझे बहुत time लगेगा ये book complete करने में. Like I'm reading it because there is no other way I can consume that information. अगर कोई और अगर मैं बातें करके किसी से ये इन्फॉर्मेशन ले सकती थी तो मैं बातें करके खत्म कर दिया होता. But I'm reading. So that is, these two are like my things right now. But I'm not like an avid reader. I'm not like reading a lot of books and this is my current read. 3 महीने बाद this is my current. No, that's not me. If you have to recommend your favorite podcast or movies, like कोई भी ऐसी movies that like go to movies, go to podcasts or episodes. Again, podcast is not my thing. Movies I can tell you. Yes. We spoke about Rockstar, so that's nice. That's like a movie. Like I just watched, like I think last week I put up on my television and I made everybody let's just watch Rockstar, you know. And so Rockstar is and then, you know, when that nadan parinde ghar aaja, it's just talking to us and I'm like you need to prepare yourself for that movie. So Rockstar of course is something I feel everybody should watch. There are very interesting movies out there. I might miss out on some right now, but you know, I think one of the underrated movies has been Key and Ka. I think it needed a lot more appreciation and love because the concept was amazing. I think they did great acting there. मुझे नहीं पता इसके बारे में. I'm not able to, like, आप मेरे को बताओगे थोड़ा? You've not watched Key and Ka?
तेरा वो बताओ। फुल नोशन अभी डाल उसके अंदर. It's वेट है ना, आई डोंट वांट टू मिस अप किस कौन डायरेक्टर है, मैं वो गलती से कुछ और नाम नहीं दे देना. द अर्जुन कपूर मूवी जो या या आप या या आ कियन का डायरेक्ट, ओ आर बाल्की की है ये. करेक्ट. या मैं वही बोलना है तो मैं गलत ना बोल दूं. यू वॉच द मूवी एंड देन यू व्हाट्सएप मी व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव मी योर रिव्यू. डन, लेट्स डू दैट. In fact, we both can watch Key and Ka together again and do an Instagram live and talk about the movie. डन. Yeah. और मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, लाइक बहुत जैसे मैं फ्लाइट में देख ली टाइप्स, ऐसा चलता है मेरा. ठीक है. Dude, I loved your वो पोस्ट की. मैं अभी इंस्टा पे आपकी पोस्ट देखी थी. Hey, I'm just getting into the flight. Give me your recommendation. And your next story. Story like flight से उतरने के बाद अपलोड हुई थी. मेरे For को people बहुत who are फनी not लग getting रहा. the content, मैंने एक स्टोरी डाली गाइस कि मैं आई पुट अप अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ. फिर मैंने लास्ट में उनको लिखा चलो गाइस आई एम टेकिंग ऑफ, तो माय फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ, तो मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स डीएम्स में दे दो, मैं लैंड करके पढ़ूंगी. फिर मैंने लैंड किया और वो स्टोरी मेरे लैंड होने के बाद अपलोड हुई, व्हिच वाज such an F moment for me. But yeah, Key and Ka again I feel is a very nice movie. Another movie I would say again I feel it didn't do very well on box office was Guzarish. Now I can be biased there because of magic. Yeah, magic. Yeah. But not just there was bias because of magic and because of Goa. I live in Goa. Yeah. So both of it. It was not just the magic and Goa for me. I think they definitely added, there were incentives. But the concept of explaining how you feel sometimes within yourself and how you want, I think that movie talks about how freedom is so important in life. Right. And you can have everything. You can have love, you can have popularity, you can have a massively big house, you can have people around you. But if you're not free, nothing of that will matter. So how the movie talks about freedom subtly, passively, is something that I really like. Very So nice. that again is one of the movies I like. I mean ऐसे बहुत सारी होगी यार. Magic related, like अगर कोई आपने कोई देखी हो चीज है या. There has to be Dude, one. it's my favorite Nolan movie. Nothing Favorite above Nolan movie. it. Prestige has defined my shows. Wow. You know, the talk about how there needs to be the act, the turn, and the prestige. Yeah. So if you see somebody who, like magicians who work with me, they know this pattern that if you want to design an act for Suhani, this is what you have to do. I'll first think of how I want my audience to feel. The first thing is the emotion. So if I'm designing an entire 2-hour show, I'll design us to starting में ये first 5 minutes में मुझे एक major applaud moment चाहिए, फिर वो इतना ऐसा फील करने चाहिए, फिर उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव डालो, फिर एक बार तो इमोशनल करना ही है, मतलब आंसू यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए, फिर उसमें से उनको ह्यूमर क्रिएट करवाना है, फिर ऐसा करना है. मतलब I design how I want my audience to feel in those 2 hours. Then I'll try to add elements, stories into it. I'll talk to my writer friends, storytellers कि हाँ ये story में थोड़ा weave in कम लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है. Last bit that is added in my magic show is the trick. कि अब trick क्या डाले इधर. That's the last bit. The entire magic is the emotion and the story. So even if I have to design a 5-minute act, तो मैं पहले सोचूंगी ये 5 मिनट क्या बनाना है, फन बनाना है, ह्यूमर बनाना है, हॉरर बनाना है, सस्पेंस बनाना है, मिस्ट्री बनाना है, क्या बनाना है, यू नो. फिर जब मेरे को वो डिसाइड हो गया कि क्या थीम है, फिर मैं उसके ऊपर वो एक्ट डिसाइड करूंगी. और मेरा एक्ट कभी भी, इफ यू सीन माय एक्ट, विल नेवर बी अ नॉर्मल जस्ट वन एक्ट. देयर बी एन एक्ट, देयर बी अ टर्न कि उसके ऊपर मैंने कुछ दिखाया. देन देयर बी वन प्रेस्टीज व्हिच इज लाइक नो यार दिस तो नॉट पॉसिबल. सो if I don't get this moment, my act is not complete for me. मेरे दिमाग में विजुअल्स वो प्रेस्टीज वाले ही चल रहे हैं, वो जब वो सिक्का दिखाता है ना अपने माइकल केन की आवाज में, जो बीच में एक बार आता है और एंड में आता है जब आप फाइनल रिवील देखते हो, ह्यू जैकमैन वाला. ओली डूड, एक सिर्फ प्रेस्टीज पॉडकास्ट करते हैं, लाइक जस्ट लाइक क्या वी टॉकिंग अबाउट प्रेस्टीज. We can It's do that. one of my favorite Nolan films, dude. Like, I'm so happy we talked about it. उसके अलावा, like, what do you think of the interpretation of magic or magicians on screen? कहीं कुछ interesting लगा हो? या मेरे को याद है AXN पे पहले एक शो आता था जब मैं छोटा था. वो एक बंदा ना कैसे मास्क सा पहन के अलग अलग ट्रिक करता था. Do you know what I'm talking about? I don't remember the Breaking name. the Magician's Code, it was called. And there was a masked magician, he was called.
and he would do all the magic acts from the classics to the contemporary to all the magic acts that existed, and he would then also reveal how the act is being done. Yeah, So yeah, it was yeah. quite a popular show, and But was it good? Like when you look at it, वो cringe था as a magician जब आप उस show के बारे में सोचते हो, या कि मतलब do you have regard for that show? या you were like हाँ ये तो ऐसे ही था. okay, so I don't have regard for the show, like I don't respect that for sure, हाँ, because तुमने thumb rule तोड़ दिया, ठीक है, तो you revealed the you reveal the tricks, so and also being a coward by masking yourself, you know. I definitely don't have respect for it, but then you do what you want to do. I mean, I'm not against it also. fair enough. मेरे को क्या करना है? But if you talk to me about the show, I feel it did a great thing to magic. So although I don't respect the magician and what they did for the show, my opinion after it is done, what is the story I tell myself to not be upset about it, is a very good story. I feel it did two very important things for the community. One, a lot of people do not watch magic, or they would not go for a magic show in their life. Like मेरे को बुरा लगता है कि 95% of world population will die without seeing a magic show, because वो एक इतना popular art form नहीं है, ठीक है. लेकिन जो लोग अब डिफरेंट है, क्योंकि आप भले लाइव शो पे ना जाओ, आप टेलीविजन पे, कंप्यूटर पे. पहले मैं सोचती थी जब इंटरनेट वाज़न्ट द थिंग, बहुत पुरानी हूं मैं. सो व्हाट द शो ब्रेकिंग द मैजिशियंस कोड डिड, जो लोग कभी मैजिक नहीं देखेंगे वो लोग भी वो शो देखते थे, बिकॉज मैजिक देखने के लिए वो भले ना जाए, मैजिक कैसे हो रहा है, ट्रिक रिवील हो रही है, वो उनको देखने में बहुत मजा आता है. Right. So what happened was, out of 100 people who would never watch magic and who did watch this show, from those 100, 10 people will now go to a magic show if it's in their city. Because wo interest in the field of magic, in the art form, is now there. अब उनको लगता है कि यार वो शो में ऐसा करता, जाके देखते हैं क्या होता है. वो एक कॉन्वर्सेशन अराउंड मैजिक स्टार्ट हो गया. तो भले 100 के 100 ना आए, 100 से 10 लोग तो आएंगे, तो एटलीस्ट जो लोग कभी मैजिक नहीं देखते, वो शो ने उनको मैजिक दिखा दिया, which I'm very happy about. ठीक है. Second thing the show did for magicians was, जितने भी क्लासिक्स ऑफ मैजिक थे जो सालों से चले आ रहे, जो हर मैजिशियन दिखाता है, वो उसने रिवील कर दिया. Now magicians have to be very smart, very creative to come up with something new. Even people who are revealing magic on the internet, on YouTube, I don't like them, but I don't mind them, because now you have challenged me to do something better than what you can reveal. Very nice. So now if you go and see my magic acts, I have to do something so challenging on YouTube. क्योंकि YouTube पे अगर मैंने डाला है, भले इसको कितने भी व्यूज, एक दूसरा बंदा वहां पे व्यू लेने के चक्कर में आएगा, revealing Suhani is this magic trick. So what do I do that this doesn't get revealed in any possible way? It's a huge challenge for me. And I love it, because that's how I'll grow. Because नहीं तो आप क्या ही challenge करते हैं ना यार मैजिक को, आपको समझ ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है. So these two pointers really make me feel कि अच्छा हुआ कि वो शो आया. मेरे को नहीं पता था इस शो के बारे में, ऐसे प्रॉपर बात करें, मेरे को एक विजुअल था. I didn't know it was such a big deal, and it did it was a huge show. I think it had like multiple seasons, if I'm not wrong. Yeah. AXN was the broadcasting channel, right? Yeah. Breaking the Magician's Code. It's now on Netflix, is what it's showing. Not in Netflix US pe hoga, I think. I don't know. Not. I don't think so. It's on the India Netflix. So it was a very popular show, and of course we are magicians. There, हमको तो like the most, when it arrived, I was asked about this question like 1,000 times. And I did not have such a great explanation to it earlier as much as I have it now, because I understand better of how the show has helped me, level up my game in terms of the art. Are you a Harry Potter fan? I haven't watched Harry Potter. So that was it, guys. Sliding out. नहीं कोई बात. But why, if I may ask? Because magic, मतलब I know वो different kind of magic है, वो fantasy और वो है. I started watching it earlier, the first
I think the first movie of it. First and second, I think I watched. बहुत साल पहले था ना वो तो. But then couldn't keep up with it. Again, as I said, मेरा consumption कम है. ये बड़ा इम्प्रेसिव है ये. लाइक आई एम काइंड ऑफ लाइक मेरे को बनना है ऐसा कि कंजम्पशन इतना ज्यादा ना हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फिर एक रेस ही हो जाती है वो कि अरे तूने इतना देखा है, मैंने इतना देखा है, तो तो ये यू है नो. यार. Like when I saw your notion कि इतना देखा, मेरे को लगता है मेरे को उतना थोड़ा मैं 10% देख लूं यार उसका. देख लूं या हाँ. पढ़ लूं या सुन लूं. बट नहीं होता यार. मैक्स आई कैन डू इज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ टू बी लेट अपडेटेड कि क्या हो रहा है दुनिया में. वो भी मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर आई लाइक बिकॉज आई कैन चूज व्हाट आई वांट टू रीड एंड व्हाट आई डोंट वांट टू रीड एज अपोज टू फोन पे यार. वो हाँ. जो उनको दिखाना है वही एल्गोरिथम मुझे दिखाता है. तो मेरे को हाँ. एल्गोरिथम मुझे कंट्रोल करे मुझे अच्छा नहीं लगता. तो मेरे को ऐसा है कि न्यूज़पेपर में एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको स्किप कर सकती हूँ. ऑफ कोर्स मेरे पास यूट्यूब पे और लाइक हर जगह भी ऑप्शन है स्किप करने का. बट एटलीस्ट मेरा फीड तो वो भर देते हैं ना अपने एल्गो से. ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर में भी है कि वो लोग दिखा देंगे जो पढ़ना है. लेकिन आई जस्ट फील इट्स अ बेटर मीडियम. और इट इज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वुडंट गेट मी हुक्ड. तो न्यूज़पेपर इज माय थिंग. मैं सुबह उठ के पढ़ लूंगी तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल गई है. Do you तो have newspaper recommendations? यार मुझसे रिकमेंडेशंस मत लो क्योंकि ऑनेस्टली मैं चूज थोड़ी. मेरे घर में आता है यार मैं तो ऐसे ही यार बोल रहा हूँ यार. मैं पढ़ This लेती was हूँ. कुछ चीजों तो उधर उठा लेती हूँ यार. अपने एयरपोर्ट पे उठा लेती हूँ तो मिल जाता है. तो मेरा फंडा ना पहले नहीं था ये सब यार. अभी मेरा टाइम है कि जितना मैं स्क्रीन टाइम कम कर सकती हूँ उतना मैं कम करना चाहती हूँ. तो आपका भी मैं एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? लाइक वो दिखाता है ना हर हफ्ते. देखना पड़ेगा. बट अगेन वर्क रिलेटेड. जिस दिन काम ज्यादा हुआ उस दिन आप ज्यादा देख रहे हो. जिस दिन काम कम हुआ आप नहीं देख रहे हो. तो मेरा अगेन किधर देखते हैं एवरेज स्क्रीन टाइम. आप लाइक सर्च कर दो स्क्रीन टाइम, वो आपको बता देगा. लाइक आप लाइक जो बाहर एक आता है ना, देख रही स्क्रॉल हूँ डाउन करके सर्च स्क्रीन स्क्रीन टाइम. टाइम. ओ टर्न ऑन स्क्रीन टाइम मैंने तो ऑफ करके रखा है. इसको आप कर दो ऑन. लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग द वे इट लाइक वो ना आपको अलग अलग कलर दिखाता है. प्रोडक्टिविटी का आपका इतना था, सोशल मीडिया कर का दिया इतना था. कर दिया. या अब बताऊंगी तेको अगले हफ्ते. नाइस. And like my last like segment is about music. How is your relationship with music? किस टाइप का आपको म्यूजिक टोन पसंद डेफ है? ब्रो. समझ नहीं पड़ता यार. पर मेरे को कुछ गाने तो सुनते पसंद है. होगे. मेरे को गाने हाँ, बहुत पसंद है. मैं उसी की बात कर रहा आई हूँ. एम कौन से गाने? मतलब पर मेरे को हर तरीके के गाने पसंद है डिपेंडिंग ऑन माय वाइब. तो मैं 2 बजे तक ऐसे जस्ट. मैं लास्ट जयपुर ट्रिप जब तू बोल रहा था हाँ. मिलने का तू नहीं था वहां पर. उस हाँ. दिन मेरे फादर की बर्थडे थी. सो वी हैड माय फादर्स कॉलेज फ्रेंड्स हैड थ्रोन पार्टी फॉर हिम लाइक 40 पीपल. भाई मैं ना रात के सुबह के 3 बजे तक नाची हूँ. स्टार्टेड फ्रॉम 11:30 टिल 3 in the morning. 3.5 घंटे. And I danced on all this like Chaiya Chaiya and I don't know like all Bollywood numbers like पुराने वाले वो भी एकदम नए भी नहीं यार. I was having fun. So for me it's like it's I don't have like a I like all of it. क्योंकि देख Very समझ ज्यादा nice. पड़ता नहीं है. जो मूड करे वो सुन लो. तो ऑफ लेट आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ ओशो जैन एंड प्रतीक हार्ड एंड स्टफ. बिकॉज मुझे ना ऑनेस्टली वो वाइब बहुत पसंद है. बिकॉज वो फ्लाइट में आप सुनते रहो आपको अच्छी नींद आती है. आप अच्छे रिलैक्स करते हो. इट्स नॉट हैवी ऑन योर ईयर्स. सो फॉर मी that's my go to. My comfort music is that. Like I feel वो पता है कैसा है. Like I explain it really bad, but how I call it is it's jazz combined with Sufi. ठीक है. तो सूफी और जैज को मिलाते हो ना मुझे वो वाइब ज्यादा पसंद आती है. नाइस. म्यूजिक लवर्स विल बी थिंकिंग उसको कुछ नहीं आता. नहीं, बट लाइक मेरा भी वही है मिक्स. लाइक मैं टेक्नो सुनूंगा, फिर घर आके कल होना के गाने सुनूंगा. लाइक ऑल लाइक पूरा रेसिपी, पूरा वो थाली होती है ना शादी वाली, Yeah. वैसा कि सारा मिक्स हो रहा है. Yeah. मेरे को So भी no, वैसा I am पसंद not है. into techno. I'm not into trance. I'm not into hard rock. Heavy metal ये सब नहीं सुन सकती मैं. That's the only thing I will be like away from. Uh, I think Bollywood भी till they are not numbers to dance on. हाँ. Bollywood भी थोड़ा कम ही सुनती हूँ. It's more of these artists. Fair enough. So my morning playlist has Ritwis, हाँ. Sage and Liggy and Ud Gaye. Those. रात के लिए there could be Bollywood and Punjabi to dance Nice. on. Nice. And then daytime में indies basically. Nice. Indie Nice. music Nice. is something that I go with. But that's pretty much. If I go and speak to list, I'm just want to see. Coke Studio, of course, is there. Yeah, it's like Ritwiz, Pratik Osho Jain,
Yeah, it's this only. My Hindi playlist. Oh, so currently, oh my God, how did I forget this? Currently, there's only one channel I'm listening to. हाँ. That is Coco Melon. You Coco know Coco? Melon. Oh my No, God, you no, don't no. know. Oh my goodness. All parents listening to us right now what Coco Melon is. How do you not know, Vaibhav? Ah. It is basically nursery rhymes. So, Ah. मेरे घर पे यानी है. यानी is my niece, जो 4 महीने की है. And most of the time I'm spending with her. So I wake up in the morning and I'm like, play. I don't know if I can say okay Google or Alexa or whatever. I say play Coco Melon, and then they start nursery rhymes. So abhi mera search Wow. history is all Coco Melon. You need to check out Coco Melon, brother. Done. If you just go, then it is. You just go and check out. Done. It's massive. तो मेरा अभी बस Coco Melon चल रहा है. You know, every YouTube video, I'm just trying to open the YouTube video of it or the channel. It is insane. It's got 140 million some subscribers. इनके बहुत होते हैं यार ऐसे चैनल्स के यार. But this one is तो like one day before तो खाली जाके देख. It's just crazy. Everything's crazy. But they're apparently Nice. also very nice. They turn nursery rhymes very positively and everything, and they put it up out there. So it's very nice. तो अभी तो Coco Melon is the thing. घर पे तो वही बज रहा है. बाहर अगर मुझे स्कोप मिल गया कुछ बजाने का तो मैं बजा दूंगी. समझ गया. बट मेरे को अभी याद आया हमने फूड और ट्रैवल की बात नहीं की. एनी क्विक फूड और ट्रैवल रिकमेंडेशंस? I am not a foodie, but I can have pani puri for life. Okay, I am a vegetarian and I don't like to eat sweet. Sweet is one taste which I don't like. तो chocolate pastry, दूध में शक्कर, ये सब मुझे नहीं पसंद. मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद स्वीट. It's just weird how I never liked it. तो मुझे सार पसंद है, टैंजी पसंद है, स्पाइसी पसंद है. पाव भाजी I like, but मैं घर का खाना वाला person हूँ. I just want to eat at home all my life. I don't want to go out. And after every show that I do, I will have दाल खिचड़ी and I'll sleep. मेरे को बुफे पे नहीं जाना, मुझे कुछ like experiment नहीं करना मेरे खाने के साथ. मैं travel पे हूँ. दाल खिचड़ी is my go-to food. So it's like extreme. Either I'm having the most spiciest pani puri or I'm having the dal khichdi. Like it's nowhere in between. So my food relation is very clear. मुझे 5 चीजें पसंद है. मेरे को 5 चीजें जीवन भर खिला दो, मैं बहुत खुशी से जी लूंगी. I genuinely eat to survive. That's it. मुझे extra food नहीं चाहिए. एंड ट्रैवल की भी मैं बात करना चाह रहा था. ट्रैवल में कोई चीज आपको, कोई ऐसी जगह है जो इंडिया में या कहीं भी यार ये मेरे को बड़ा पसंद है, कोई ऐसे locations or places? So for me, travel is learning, is conversations with places and new people. So I want to go to any place that I have not been to so far. I went to Paris recently. ठीक है, तो मैं पेरिस गई और मैंने देखा यार बहुत अमेजिंग सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल. मैंने बहुत वॉक किया, बहुत अराउंड देखा, मुझे बहुत मजा आया. एंड आई रियलाइज इट्स अ वेरी रोमांटिक प्लेस. सो यू शुड गो देयर विद योर पार्टनर. नाउ आई डोंट हैव अ पार्टनर राइट नाउ. But then I thought, even if I have a partner, or when I have a partner, I don't think I'll again come to Paris. Because life is too short to go to the same place again. Oh. There are many more places. मैं जिंदगी भर भी घूमती रहूंगी तो भी दुनिया तो कवर नहीं कर पाऊंगी. तो I want to go to a newer place that I have not seen. If I've been to one place once, I want to go to a newer place again. Only thing is that मैं shows ऐसा करती हूँ कि of course हम बार-बार एक जगह पे जाते रहते हैं. So that's a different point. But that's one thing about my travel, new places I want to see. Secondly, I will not consider that I have seen the place or the city till I have not been to the local market of the place. तो मेरे लिए लोकल मार्केट वॉक करना, नॉट इवन गाड़ी से पास होना, ठीक है, लोकल मार्केट में करीबन 3-4-5 घंटे ऐसे चल के लोगों से बात करके, बार्गेन करके या नो बार्गेन, जैसा भी उधर का कल्चर है. जब तक मैंने वो लोकल मार्केट वॉक नहीं किया ना, तब तक मैं मानती नहीं कि मैंने वो सिटी देख ली है. तो मुझे वो लोकल मार्केट वॉक करना बहुत जरूरी. बिकॉज आई फील द लोकल मार्केट हैज द एसेंस ऑफ द सिटी. इट इज द सोल ऑफ द सिटी. दैट विल टेल यू हाउ द एंटायर सिटी इज, हाउ आर पीपल, व्हाट इज द कोर थिंकिंग. मतलब बाकी तो आपको पता है, सब लोग इंटरनेट पे सब एक जैसी भाषा बोलेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, वो पता है आपको. लेकिन जब आप लोकल जगह पे जाओगे ना मार्केट में, तो आपको उधर का फ्लेवर मिलेगा. And it is, you should try this. Just, it is so amazing. And every city में you'll find something very unique. Like even in India, अगर आप अहमदाबाद हो तो मानिकचंद मार्केट जाओ, you know, you have to see the like local. मैं उदयपुर थी तो आप वो बाबू बाजार जाओ या आप उधर का मार्केट जाओ. It is too good.
जयपुर में भी बापू बाजार है ना? हाँ, पर जयपुर में बाबू बाजार इज नॉट द लोकल मार्केट. लोकल मार्केट का नाम क्या है? जौहरी बाजार. जौहरी बाजार. करेक्ट. Yeah. Johari Bazaar. So I went to Johari Bazaar over there. Not this trip, long time ago I went there. But this was great, यार. Thank you so much, Suhani. मेरे को बड़ा मजा आया. But like before, like I wrap the conversation, कोई ऐसी चीज जो मेरे एंड से रह गई हो यार, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, या यू वांट टू एड्रेस समथिंग, यार हमने इसकी बात नहीं की, लेट्स टॉक अबाउट दिस, और एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी रैप दिस? ठीक है यार, काफी है. वो हाँ, आएगा तो सही. दिन में कुछ ज्यादा था, वापस बोला मैं आज पूरे दिन इस पीसी पे आगे इधर बैठी हूँ, तो डन बोलेगा मैं फिर डन. से कैमरा ऑन करके तू सवाल पूछ लेना तेरा. नहीं तो 20 तारीख को. 20 तारीख को पूछ लेना. And you have to watch Kian Ka. Yeah. And then once you have watched, tell me when you are watching Kian Ka. Done. I'll also Done. try to watch it that day again, and then let's do an Instagram live talking about Kian Ka. Done. 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 ठीक है? Done. Done. Of how Done. amazing the movie, because I feel it's very under. It's a very good movie. Gender stereotypes को break करती है, so it's very nice. Done. ये करते हैं. And thank you so much. आपको मजा आया? I had a lot of fun. Fun, yeah. It was fun session. Yeah. तो बहुत existential सवाल पूछे तूने, but ठीक है. Hello, Susha squad. I think Vaibhav and his team is doing an incredibly amazing job at giving us conversations which are so candid and the flip side of an artist or the person you see, you know, externally. So I'm sure this is the content you don't want to miss on the internet. Yeah. So make sure you subscribe to the channel and let them hit their target as well. ताकि वो भी खुश, हम भी खुश, सब खुश. Happy artists out there. Thank you so much, guys. Make sure you like the video and comment down what you liked about this video or something that you want to tell us, or there are questions that you want to ask. I will come on the video again when it's released and try to answer it in the comment section for you guys as well. Thank you so much for watching.